Student, see question. Prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at center of a circle. स्टूडेंट यहाँ प्रूव करना है कि एक सर्किल जो कि सर्कमस्क्राइब है एक क्वाड्रिलेटरल पे, उसकी अपोजिट साइड जो सेंटर पर एंगल बना रही है वो सप्लीमेंट्री हैं आपस में. मैं आपको फिगर बनाकर समझाता हूँ कि आखिर क्वेश्चन में करना क्या है. नाउ सी अ quadrilateral ABCD in which there is a circle with center O. This now आपको प्रूव करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल COD अपोजिट साइड सेंटर पे एंगल बना रही है इज इक्वल टू 180 डिग्री. बोथ आर सप्लीमेंट्री. ऑल्सो एंगल BOC प्लस एंगल DOA इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये भी दोनों सप्लीमेंट्री प्रूव करने हैं. नाउ प्रूफ. टेक PQR and S contact points of tangent AB, BC, CD and DA respectively and join PO, QO, RO and SO. ये ज्वाइन कर लीजिए आप. स्टूडेंट यहाँ बहुत सारे एंगल बन गए तो मैं अब इन एंगल को नंबरिंग से नाम देता हूँ. तो एंगल AOP को 1 एंड POB को 2 एंड सो ऑन 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे एंगल्स को मैंने नेम दे दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. नाउ सी AS इज इक्वल टू AP टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A. नाउ DS इज इक्वल टू DR टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट D. CR इज इक्वल टू CQ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट C एंड PQ इज इक्वल टू PP टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P. सिंस टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, this is the region. Mark all this equation 1. Now see in triangle ODS and triangle ODR. See OS is equal to OR, both are radii of same circle. OD is equal to OD, both are common side, दोनों triangle में common है. And also DS is equal to DR. This is from equation 1. Now triangle ODS will congruent to triangle ODR. हम लिख सकते हैं by side congruency criteria. Therefore, angle 7 is equal to angle 6. This angle 7 and this angle 6 by CPCT. Congruent parts of congruent triangle are equal. Similarly, angle 5 can be proved as equal to angle 4. Angle 3 can be proved as equal to angle 2 and angle 1 can be proved as equal to angle 8. Since the sum of all the angles round a point is 360 degrees, so angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 8 is equal to 360 degree. ये दोनों ये सब मिलके एक राउंड एंगल बना रहे हैं. Now see, angle 1 and angle 8 are equal, so angle 1 can be written as angle 8. Also angle 2 and angle 3 are equal, so angle 2 can be written as angle 3. Now angle 4 and angle 5 are equal, so angle 5 can be written as angle 4 and angle 6 and 7 are equal, so angle 6 can be written as angle 7. So this become 2 angle 8 angle 3 angle 4 angle 7 or bracket 2 bracket angle 3 angle 4 angle 7 angle 8 is equal to 360 degree. So angle 3 plus angle 4 plus angle 7 plus angle 8 is equal to 360 by 2 equal to 180 degree. Now see, angle 3 plus angle 4 is angle BOC and angle 7 plus angle 8 is equal to angle DOA is equal to 180 degree. So यही हमें प्रूव करना था, यानी BOC plus DOA सप्लीमेंट्री हैं. Similarly, we can prove that angle OAB is equal to angle C plus angle COD. Angle AOB plus angle COD is equal to 180 degree, यानी ये दोनों भी सप्लीमेंट्री हैं. Hence proved.